सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। बास कम करो बास। BASS थोड़ा कम करो। हरिओम 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 बस है। ओके नाउ so akara ukara and makara, three matras are denoting Vishwa, Taijasa and Prajna. What is Kena Samanyat between Akara and Vaishwa, Vaishwanara? Vyaptihi and Adimat. One is pervasion, pervasiveness and beginning. These two are the causes. Similarities, reasons. Now, having said this, one who knows this, what is the phalam? Apnoti havai sarvan kamanadihi pratamascha bhavati mahatamya evam veda. Two things are said. Still echo is coming better. I don't know what to do. आपको आ रहा है ना echo? Echo. है ना? Some adjustments. Clear नहीं है. हरिओम हरिओम। बास कम कर दीजिए, बास ट्रिबल बढ़ाना थोड़ी सी। ट्रिबल इज शार्पनेस, बास इज फॉर द हेवीनेस ऑफ वॉइस। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटर नाउ? कम हो गया ना? बस bass is for heaviness of voice, treble is to increase sharpness of voice, so to be adjusted. Now two things are told. अभिधान अभिधेयो एकत्वं च उवाचाम आदिः अस्य विद्यतः इत्यादि इति आदिमत् यथा एव आदिमत् अकार आख्यम अक्षरम तथा एव वैश्वानरः तस्माद्वा सामान्यात् अकारत्वं वैश्वानरस्य तद एकत्वविदः फलमाह आप्नोति हवै सर्वान् कामानादि प्रथमश्च भवति महतां य एवं वेद यथोक्तम् एकत्वं वेद इत्यर्थः. Two things are said. When ekatvam is known between akara and vaishwanara,
all desires are fulfilled, plus Mahatam Bhavati, he becomes foremost among the great people. Among the great people, Mahatam Prathamascha Bhavati. Prathamascha Mahatam Bhavati. He becomes foremost among the great people. Two things are told. इस पर थोड़ा हम विचार करके और आगे बढ़ेंगे. See, one who does sadhana, akara, emphasizing akara, and identifying, keeping their dhyana concentration on Vaishwanara, then they attain or achieve identity between akara and Vaishwanara. What happens? All desires will be fulfilled without any effort. Why? On their own. अपने आप सारा कामनाएं एक के बाद एक बस they get fulfilled. Now the question is, why does it take place? Because akara, with emphasis on akara, with omkara dhyana, when omkara ucharana is being done, if the Vaishwanara is kept in view, so with akara and Vaishwanara, and विश्व के ऊपर, वैश्वानर के ऊपर मन लगा के ध्यान करने से whole universe becomes your body. Vaishwanara, who is Vaishwanara? Virat Rupa. So when whole universe is your body, that is, everything is already yours. जैसा कि आपके घर में बहुत सारे चीज़ होते हैं. So many articles are there. All those articles belong to you. You identify with them, it is yours. Malik. Now, who can prevent you from possessing, from taking a vastu from your own house? By you. You have taken an object from your house, either to play with it or break it or whatever you want. Who can prevent when everything is yours? You go to somebody's house. Even if you want to sit, you will ask them, can I sit in this chair, please? Would you please give me one glass of water? You have to request, you have to ask. Can you switch on please AC, if possible, if you don't mind? ऐसा पूछते हैं कि नहीं? Almost begging. Your own house, the way you switch on AC, the way you change your chairs, the way you spread your legs in the sofa. Why? Everything is yours. Similarly, when I become, my whole universe is my body, Virat Rupa, Vishwanara, Vaishwanara. So everything is my own. Nothing remains unattainable to me because everything is already belonging to me. I can use anything, whatever I want. Everything is with me. So all my desires are automatically fulfilled. जब अपना घर पे रहते हो, भूख लग रही है, तो आप खुद किचन में जाके कुछ ना कुछ पका के बना के खा लेते हैं. Who can prevent you? If you go to somebody's house, if you are hungry, then you ask,
Sir, do you have a habit of eating breakfast in your house in general? Why do you ask this question? मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओगे क्या? Suppose other man says, no, we don't have a habit of eating breakfast, nor we allow anybody to eat breakfast in our house. Then do you keep quiet? If hunger is too much and there is nothing to what you can do. Would you mind if I do something for myself, please? Make something for myself. हमारा घर पे हम राजा हैं. Everything is mine. So Vishesha Prayatna is not required to procure an object which is already in my house. So this sadhana, when we identify with Virat, Vishwarupa, Vaishwanara, everything is my own. Beauty it is. Not only this, second one is counted as foremost among the Mahatmas. Is the foremost, Prathamaha, first class citizens. First citizens of our country, meaning first class citizens. Why? Because, देखिए, महान, greatness is born out of one's own vicharadhara. सही विचार, अच्छे विचार रखे तो you become foremost. Good thoughts, love, concern, care, harmlessness. Then you become foremost among people. तो किसी का थिंकिंग में थोड़ा आगे है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड नॉलेज अलोन, बट सोच विचार में कोई यदि आगे है हमसे, हम तो कहते हैं कि देखो पता नहीं ऐसा, आप ऐसा कैसा सोच रहे हैं, तो बढ़िया सोचे आपकी, हम बोलते हैं कि नहीं. इस सोच में या इस विचार में आप हमसे आगे हैं. हम पता नहीं आपके स्तर तक हम कितने जन्म लेंगे पहुंचने में. बिकॉज फोरमोस्ट महताब नो, यहाँ पे दिस महात्मा थिंकिंग, वन हु इज आइडेंटिफाइड विद टोटलिटी, is not conditioned by or limited to a particular place and time. हमारा सोच जो विचार है, it is bound by time and place. हम किसी देश में बैठ के किस देश के बारे में सोचते हैं, किसी समय पर समय के बारे में सोचते हैं, पर विशाल भावना, विशाल धारा, विशाल चिंतन हमारे पास नहीं है अभी. जो समष्टि के साथ तादात्म्य होकर जीते हैं, उनका सोच में ये व्हाट यू कॉल इट इज नॉट परिमिति मीन्स लिमिटेड बाय टाइम एंड प्लेस. हमारा सोच वस्तु में भी एक, ये वस्तु के बारे में हम सोचते हैं, दूसरे वस्तु हमारा निंदनीय वस्तु है, अयोग्य वस्तु, योग्य वस्तु, ये अच्छे समय है, ये बुरा समय है, अच्छा देश है, ये बुरा देश है. भगवान ने जिसने बनाया है सृष्टि, भगवान, तो उनके विचार में क्या अच्छा बुराई हो सकता है क्या? शरीर में सारे अंगों में कोई नीच अंग नीच काम करना है, कोई उत्कृष्ट काम करने वाले, बट मेरे लिए ये सब सारे एक ही है. सभी अंगों के प्रति मेरा भाव एक ही है. I cannot scold some parts of my body, abuse or disrespect, but I love every part of my body.
तो मेरे मुताबिक फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ही देह में अच्छा बुराई कोई नहीं है। देखिए, तो भगवान की ओर से यदि सोचे कि वो अच्छा बुराई देश का कुछ नहीं है, सो विशाल चिंतन हो जाता है। दैट्स वाई देन थिंकिंग इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब क्या है? हम समष्टि सुख के लिए सोचते हैं, समष्टि भलाई के लिए सोचते हैं, समष्टि पुरोगति के लिए सोचते हैं। I can't tell you that Vishala thinking. So when that happens, thinking for the whole, thinking for good of everybody, is a result of identifying with Vaishwanara. What is Upasana? ओंकार उच्चारण करते करते आ के ऊपर ध्यान रखें और विश्व में जो भी है उस प्राप्ति के लिए, विश्व के प्राप्ति के लिए, वैश्वानर बनने के लिए, विराट से तादात्म्य होने के लिए ऐसा संकल्प रखे मन में। यदि हम जप करते हैं, ओंकार ध्यान करते हैं, तब समष्टि के साथ तादात्म्य होना, उस तादात्म्य से दो चीज़, सारे कामनाएं कामनाओं की पूर्ति, और दूसरी क्या है? फोरमोस्ट, प्रथमम भवति, बिकॉज ऑफ आवर सोच और विचार। है कि नहीं? सो दीज टू थिंग्स आर देयर। सो यदि जब हम महात्माओं के गणना हम शुरू करते हैं, when we start counting Mahatmas, who is to be counted foremost of this type? अच्छे भावना है, उनका भाव बड़ा है, दिल बड़ा है, तो उन्हीं लोगों को पहला गिनते हैं कि नहीं? न तो जिसका दिल छोटा है उसका गिनते हैं क्या हम? तो इतना बड़ा विशाल दिल है। Therefore, they become prathamam, foremost. हो गया बात? This is the ओंकार साधना and प्रथम अकार and वैश्वानर के साथ सामान्य, that वाचक वाच्य भेद, if it is removed by identifying with it, this happens. Next mantra, 10th one, उपनिषदिक मंत्र। स्वप्नस्ताना तेजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद। स्वप्नस्तानो तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद। Now, Swapna, that is Taijasa, Ukara mantra. What is it now? Swapnasthana Taijasaha yaha saha Omkarasya Ukara Dvitiya matra. Now, Swapnasthana is there, Taijasaha. Who is the Swapnasthana Abhimani? Taijasa, Purusha. Samasti is Hiranyagarbha. This Taijasaha, स्वप्नस्थान तैजसः उकारः ओंकारस्य उकारः आ उमा में it is equal to compared with ukara of auma. So ukara and taijasa,
द्वितीय मात्रा, द सेकंड मात्रा ऑफ ओंकार में, आ उमा में दूसरा क्या है? उ. सो तैजस स्वप्न स्थान, हु इज द स्फीयर ऑफ एक्टिविटी ऑफ तैजस? स्वप्न स्थान. सो दैट स्वप्न पुरुष जो है, जिनको हम तेजस कहते हैं, तो तेजस का वो क्रीड़ा भूमि क्या है? स्वप्नावस्था. तो इज कंपेयर्ड विथ द्वितीय मात्रा, सेकंड मात्रा ऑफ ओंकार. So Onkara is A Uma. So second matra is U. So U is compared with similarity between U and Taijasa. This is similarity. Right. Kena samanyena iti aha. Now what is the similarity? What is the common features between Ukara and Taijasa? जैसा हमने कॉमन फीचर्स देखा है कि नहीं? व्याप्ति ही आदिमत, दिस टू फॉर अकार एंड बिटवीन अकार एंड विश्व, सिमिलैरिटी व्याप्ति ही एंड आदिमत. वैसे ही हम ढूंढना है कि बिटवीन उकार एंड तेजस सामान्य क्या, व्हाट इज सिमिलैरिटी? वाई द तेजस इज इक्वेटेड टू उकार ऑफ ओंकार मंत्र? वन इज सेड केन सामान्येन इत्यह. फर्स्ट वन इज उत्कर्षात्. फर्स्ट कारण इज सिमिलैरिटी इज उत्कर्ष. उत्कर्ष मीन्स आट अकाराद उत्कृष्ट इवी. मीनिंग व्हाट? उत्कर्ष मीन्स बीइंग सुपीरियर. इट इज एक्सेलेंट. इट इज एक्सेलेंट मीन्स बीइंग सुपीरियर टू. वन इज बीइंग फॉर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सेलेंस, एक्सेलिंग something. भैया ये क्या? what is excelling here? Excelling what? So उत्कर्षात्. अकारात् उत्कृष्ट इव ही उकारः. Indeed, ukara is as if it is superior to akara. Superior. First A is born, but modified and evolved perhaps as U. So U is as if Iva, Utkrushta Iva. So as if it is excellent, better than. Letter U, Akshara U is better than Akara, Utkarshat. Tatha Taijasaha Vishvat. Similarly, Taijasa is Utkrushta, superior to Vishwa. Why it is superior? Actually speaking, one kind of thought is that the more inner we go, we are closer to truth. Mind functioning through indriyas, bahirmukha, extroverted, experiencing the waking world is inferior to senses withdrawn, operating only in the mind, projections of the mind, bent subtler than gross, and samasti taijasa is hiranyagarbha. Hiranyagarbha is a great state. So it is closer to truth. So Taijasa is superior to Vishwa. There is one karana which I mentioned is not mentioned here. So that is not the purpose of discussion now. Acharya Upanishad mantra says first one Utkarshat. Taijasa Vishvat. Now Ubhayatvadva Akara Makarayoho Madhyastha Ukaraha. Second one is that Ubhayatvadva, meaning this ukara, first one is utkarshat, second one is ubhaya bhaktvam, means what? It is related to both. How? Ukara is between akara and makara. Taijasa is between Vishwa and Prajna. So this is intermediate. Ukara is intermediate in position and
Taijasa also is intermediate between Vishwa and Prajna. Ukara is between Akara and Makara. So both there is another similarity. Abhayatvat va. That is Akara Makarayoho madhyastaha Ukaraha. Tatha Vishwaprajnayoho madhye Taijasaha. Ataha Ubhayabhaktva Samanyat. Because of this similarity, that is, both of them are middle, both of them are related to either of these two, either mean both of these two, extend like the extremes. Therefore, this Ukara, Taijasa, and there is similarity between Ukara and Taijasa. So, दो कारण बताया गया. One is Utkrishtat, Utkarshat. Second is Ubhayabhaktva. Ubhayabhaktva means related to both. Okay. Now, Madhyastha, that is Madhyastha, remaining in between, center. Because of these two, this is equated, similarity. Now, Vidvat Phalam Uchyate. Now, Vidvat means the one who knows the similarity or identity between Ukara and Taijasa. One who comes to know, one who realizes the identity. तो इनका फल क्या मिलता है? फलम, विद्वत् फलम उच्यते. नंबर 1, उत्कर्षति ह वै ज्ञान संततिम. ब्यूटिफुल. उत्कर्षति ह वै ज्ञान संततिम. मीनिंग व्हाट? He heightens. Utkarshati means heightening, increasing, heightening. Akarsha is there, no? Karshati, akarsha, apakarsha, utkarsha. Being pulled up, rising above, heightening, increasing. Utkarsha. So first one is Utkarshati vai Jnana Santatim. Beautiful one. One is that this he heightens the Jnana Santati, the current of knowledge. He increases. It increases. Levels of knowledge, Jnana Santati increases. Meaning what? अब देखिए. Why Jnana Santati increases? This Hiranyagarbha, Ukara is, Samast Ukara means what? Hiranyagarbha. Right. Now, Hiranyagarbha Taijasa. Taijasa Veshti, Hiranyagarbha Samasti. अब क्या होता है? When we meditate on the similarity between Ukara and Taijasa, Hiranyagarbha, then what happened? Sukshma Samasti, I am identified with Sukshma Samasti, the total subtle body. Hiranyagarbha is the storehouse of all knowledge. It remains, the past, present and future, everything is hidden in Hiranyagarbha. So, when we identify with the Samasti Sukshma, it is a practical anubhav of many people, many Mahatmas. Bhishmacharya ji logged on to or identified with that state only. And beyond that buddhi, samast buddhi के साथ तादात्म्य हो गया उनका हिरण्यगर्भ. So, knowledge of samasti makes our buddhi pure. हम impure किसको कहते हैं? जिसमें पूर्णत्व नहीं है वो impure है, incomplete. That which is incomplete is always impure. It is incomplete means what? Something else is present. Purity is not complete, meaning impurity is there. When buddhi identifies with samasti, what happens at that time?
or the knowledge of the samashti, when takes place, our buddhi becomes pure. Shuddha buddhi. Now, so buddhi becomes pure also, and since it is pure buddhi, it is able to reflect and identify with total subtle body and Hiranyagarbha sthiti, that is Hiranyagarbha sthiti. Therefore, he is getting samashti knowledge, all knowledge. Now, by identifying with samashti सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होकर जीने से इसका और एक फल निकलेगा. क्या होता है? दैट हेट्रेड फॉर द ग्रॉस वर्ल्ड गोज अवे. One of the most difficult thing to conquer is that we feel spiritual progress means undercurrent, without saying it goes, that in initial stages developing hatred towards the Jagrat world. Hatred means what? You don't like this, disliking with the Jagrat state. But this hatred goes away. When hatred goes away, because the buddhi becomes pure, acceptance levels are very high, and therefore there will be equanimity. And since there is equanimity, what happens now? Samanaha tulyascha mitrapakshasya iva shatrupakshanamapi apradveshya bhavati. Beautiful one. Because of this equanimity, just as mitrapaksha, friends don't hate this man, no friend hates anybody. This man is not hated by his friends. Just as much as friends like him and don't hate him, that much even enemies don't hate him. That's the beauty. Because of samanatulyaha, he is equal to all. Equanimity again, samanatulyascha mitrapakshascha iva shatrupakshanamapi apradveshyo bhavati. Meaning he is not become an object of hatred even for his enemies. Even enemies don't hate him. अब उल्टा जाएं हम. पहला चलो देखिए, दो फल बताया गया यहाँ पे. एक फल क्या है? ज्ञान संतति. सेकंड वन इज समानः, एंड थर्ड इज अनदर थिंग विल कम. एनीवे, अब देखिए, इन केस विश्व में क्या था? ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड एंड यू बिकम फोरमोस्ट अमॉन्ग द ग्रेट पीपल. हमको हुआ क्या? हमारे जीवन में हो रहा है क्या? हमारा अपने आप सारे डिजायर्स होते जा रहे हैं क्या कंप्लीट? बिना मेहनत, बिना आसानी से नहीं हो रहा है. जो हो रहा है करके जो आपको लगता है वो आपके पिछले जन्म में या पिछले पुण्य कर्म का फल है, वो आपको आगे धक के लेके जा रहे हैं. अच्छा, आर यू फोरमोस्ट अमॉन्ग महताम? तो इसका मतलब हमारा प्रथम साधना भी नहीं हुआ. दूसरा साधना हमारा ज्ञान संतति, बुद्धि बिकमिंग प्योर एंड आइडेंटिफाइंग टोटलिटी. देयरफॉर ज्ञान संतति वृद्धि हो रही है क्या? हाँ, हो रही है. हो रही माने इसका मतलब क्या है? समान भाव आ गया क्या? इक्वानिमिटी वो नहीं आया. वो नहीं आया माने ज्ञान की वृद्धि नहीं हुआ. अब हम जो कह रहे हैं मेरा ज्ञान बढ़ते जा रहा है, आई एम अनेबल टू कंटेन माई इंक्रीज्ड नॉलेज. व्हाट टू डू? व्हाट नॉलेज इंक्रीज्ड? इफ रियली नॉलेज इज इंक्रीजिंग, सेकंड उपासना, तब क्या होना चाहिए मन में?
Dvesha will go. There is no hatred. Gurus also no hatred. They may punish you if you want without hatredness. So equanimity आनी चाहिए. तो बुद्धि बढ़ते जा रही है, बुद्धि में ज्ञान बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है? समान भाव आना चाहिए. समान भाव आया नहीं, इसका मतलब ज्ञान नहीं हो रहा है. जिसको हम ज्ञान कहकर बैठे हैं वो ज्ञान नहीं है, उल्टा जा रहे हैं. और तीसरी है समानता आ गई. हाँ स्वामी जी मेरे को समानता आ गई माने उसका दूसरा प्रमाण क्या है? नोबडी शुड हेट यू. बट असली बात यह है कि घर वाले हमसे द्वेष करते हैं. नहीं मैं प्योर हूं, लोग मुझे समझते नहीं, ये प्रश्न नहीं उठता. यू बिकम सो प्योर दैट इवन फोर्सफुल एनिमीज ऑल्सो विल नॉट हैव हेट्रेड. उपनिषद प्रमाण. If we are really pure, enemies don't hate us. That's it. यही प्रमाण है. This is वैदिक धर्म. If you say नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है. उपनिषद. आपको हिम्मत है क्या ऐसा कहने के लिए? उपनिषद वाक्य प्रमाण. So when we really become pure, when enemies also will not hate us, वो शांत हो जाता है. समानतुल्यस्य मित्रपक्षस्यैव शत्रुपक्षाणामपि अप्रदेश्यो भवति. Next one, third phalam is when utkarshati, then no dvesha, even for enemies also don't hate us. Third one is अब्रह्मविद अस्य कुले न भवति. Beautiful. इनके कुल में ब्रह्मज्ञानहीन आदमी या पुरुष या स्त्री जो भी है व्यक्ति जन्म नहीं लेता. सारा खानदान में ब्रह्मचिंतन करने वाला, साधना करने वाले, शुद्ध करने वाले, अपने जैसे कि कुछ परिवार में सब लोग पैसा कमाने में बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक. सुबह से शाम पैसा कमाने में सब लोग पैसा कमाने के पीछे रहते हैं और कंपटीशन चलते रहते. तुम्हारा कितना सैलरी, तुम्हारा जीपीएफ कितना, तुम्हारा पीएफ कितना, तुम्हारा बोनस कितना, तुम्हारा पैक्स कितना, तुम्हारा क्या है, यही झगड़ा सुबह से शाम तक कुछ घरों में. तो ऐसा है ना कि नहीं? Some houses are like this only and always fighting. Competition among family members. Some families. But इनके फैमिली में अस्य कुले अब्रह्मवित् कुले न भवति. So अब्रह्मवित्, one who doesn't know ब्रह्मन, ऐसा वाला कोई ब्रह्म को ना जानने वाला उनके परिवार में जन्म नहीं लेता. माने सभी का से ब्रह्मज्ञानी जन्म लेगा. और जिस परिवार में ब्रह्मज्ञानी लोग ही जन्म लिए उनका घर में कैसा एक्टिविटी रहते हैं? सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ प्रवचन, सत्संग, चिंतन, ब्रह्मचिंतन, यही बस लगातार. नहीं तो क्या होता है? पत्नी पति के बीच में झगड़ा, बच्चों पे माँ बाप के साथ झगड़ा, आपस में बच्चे झगड़ा. एक सिद्धांत अलग अलग है. घर में 4-5 लोग रहेंगे और अपना अपना सिद्धांत पकड़ कर बैठते हैं. किसी का सिद्धांत पैसा कमाना, किसी का सिद्धांत पॉलिटिशियन बनना, किसी का सिद्धांत दूसरों को ठग देना, पैसा कमाना.
तो आपस में झगड़ा। अब्रह्मविद अस्य कुले न भवति। तो संस्कार से ही बचपन से ही सभी लोग ब्रह्मचिंतन में लगे रहते हैं। ये फल है। एवं वेद, एवं द वन हु नोस दिस वे, आइडेंटिटी बिटवीन उकार एंड तेजस, इसका ये होगा। ठीक है। Who is not a knower of Brahman is not born in their family. This is a beautiful phalam. Okay. सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा मितेः अपीतेः वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। When I am splitting sandhi, you must mark it. That is why I am chanting, splitting it. सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा मितेः अपीतेः वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः, वही सुषुप्तस्थान प्राज्ञ का जो स्पीयर ऑफ एक्टिविटी और स्पीयर ऑफ इट इज देयर। डीप स्लीप इज हिज स्पीयर। किसका स्पीयर, किसका क्षेत्र? सुषुप्त प्राज्ञ का। सो सुषुप्त स्थान प्राज्ञो यह सह ओंकारस्य मकारः तृतीया मात्र। दिस इज अ उमा, ओंकार का तृतीय मात्र अ उमा, थर्ड वन मकार इज प्राज्ञ। केन सामान्यात्? Now what is the identity or similarity between makara and prajna? थोड़ी कह सकते हैं। और किसने कहा he is like a moon. केन सामान्यात्? What is similarity? तो बता तो दे दिया। गोल गोल है क्या, मोटा मोटा, बिना हाथ बिना पैर? दैट सिमिलैरिटी? नो 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 नो, नॉट दैट सिमिलैरिटी, नो। पर जैसे चंद्रमा में वो पूरा ऑल बिग डिफरेंट होल्स एंड फेस इज फुल ऑफ व्हाट डू कॉल सो मेनी थिंग्स, अनइवन, ऐसा है क्या? न न न न न, नॉट, दैट इज नॉट सिमिलैरिटी। अच्छा, तो मुखम चंद्रबिंब में बहुत गोल गोल है क्या मुख उनका? राउंड राउंड शेप्ड हेड फेस? नो नो नो, दैट इज नॉट सिमिलैरिटी। अच्छा, तो फिर क्या सामान्य, उसका भी ब्राइट है क्या, लाइक मून? नो 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 नो, वो भी नहीं है। इतनी सिमिलैरिटीज है क्या? फिर क्या? इफ यू से इज लाइक मून, विच सिमिलैरिटी नाउ? मैं बता देता हूं क्या। ही सो कूल लाइक मून रेज, वहां पे इस आदमी के लिए। और कोई दूसरा के लिए मुखम चंद्रबिंबवत, ब्यूटिफुल फेस लाइक चंद्रबिंब, राउंड राउंड फेस, clean, shining. Similarly, you simply say akara, ukara, makara is Vishwa, Taijasa, Prajna. What is similarity? Kena samanyena iti yaha.
सामान्यम इदम अत्र, दिस इज द सिमिलैरिटी अत्र, यहाँ पे ये है सिमिलैरिटी. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज मितेहे. मितेहे मीन्स मितिहि. मितेहे मीन्स ऑन अकाउंट ऑफ मिति. व्हाट इज मिति? मिति मीन्स मानम. मानम मीन्स मेजरिंग, टू मेजर. सो फर्स्ट कारण क्या है? सिमिलैरिटी टू मेजर. मितेहे means mitihi, on account of miti, because of measurement. What is measurement? Miti means manam, measurement. Manam means miyate, means that which is measured. Anena miyate, something is measured with it. Miyate. Now मानम मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञेन. विश्व एंड तेजस as if they are measured by prajna. Vishwa and Tejasa as if they are measured by prajna. Mitehe. So prajna is measuring them, Vishwa and Tejas ko. How? प्रलय उत्पत्त्योः प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव यवाः. नाउ देखिए, अभी वंडरफुल थिंग. प्रास्ता मीन्स ए वेसल, ए कंटेनर. यू नो, एक सेर बोलते, एक सेर, दो सेर, सुना होगा मेजरमेंट. इन आइदर किलो ऑल्सो न, समथिंग वेरी इंडियन स्टैंडर्ड इट इज. दूध भी ऐसे दे देते पहले. अभी 1 किलो 2 किलो बाद में आया मेजरिंग. पहले क्या होते हैं ना मेजरिंग, वो मिलता था बाजार में, पाव सेर, आधा सेर, 1 सेर, पर्टिकुलर मेजरमेंट. लाइक दैट समथिंग इज दैट प्रास्त, ए वेसल. यवा मीन्स बार्ली और ग्रेन, बार्ली. सम जस्ट एज विद दैट प्रास्ता, that measuring bowl, dabba, we measure some kind of barley or dal, chawal, etc. Similarly, pravesha nirgamabhyam prasthena eva yavaha. Similarly, Vishwa and Tejasa are measured. वो कंटेनर लेके हम मेजर करते हैं ना, 1 सेर 2 सेर ऐसा करके. सिमिलरली Vishwa and Tejas are measured because how of their entry, Vishwa and Tejasa's entry and exit. Entry into the state of prajna, exiting from the state of prajna. अब देखिए, when A enters B, B should be larger than that. Accommodative. That means B is able to measure A. So प्राज्ञ में जब विश्व एंड तेजसा they enter, प्रवेश and निर्गमाभ्याम, again come out. So prajna is like that vessel which is measuring Vishwa and Tejasa, because they enter into him, prajna state, and come out of it. Chale, little bit I will tell you something. Prajna is bija sthiti, seed state. विश्व एंड तेजस, these two states में हमारा जो जो संस्कार हम प्राप्त करते हैं, वेकिंग प्लेन एंड ड्रीम में, कुछ अनुभव की तरह कुछ नई वासनाएं, नए संस्कार,
सब प्राप्त कर लेते हैं। Whatever samskaras, whatever we gain in both these states, while interacting with their respective worlds, that is dream and waking, we gather so many things, and all of them are from their effect state, karya state, all sucked by prajna, and we enter into deep sleep. Now, as if I am talking, just talking, in sleep, all of us are same. Prajna. Prajna is not one per head, we saw. Only one स्थिति is there. हिरण्य आनंदमय कोश में एक ही है, तो उसमें प्रवेश करते सब लोग. हर हर ब्रह्म गच्छति. So when we are in deep sleep state, एक और दो तीन आदमियों के बीच में अंतर जानना मुश्किल, जान नहीं सकते. सब लोग सो रहे हैं, नो डिफरेंस. जैसा उठे, so prajna is measured their vasanas, their thing. So their samskaras, their character, their nature totally becomes different from each other. They become conspicuous. They express out their own nature. It can be seen clearly. So it is measuring, no? Each prajna. So you can, prajna is measuring. Everybody is weighing in that, in the prajna. Vishwa Tejas का पूरा weigh करते हैं, weighing its entire thing, measuring condition, everything is hidden state. When you come out, everything is again when you go back, it's measuring. So उसी से जाना, उसके अंदर जाना, उससे बाहर आना. So measuring हो गया कि नहीं? It is weighing everything. Therefore, प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव यवाह यथा ओंकार समाप्तौ पुनः अगेन ओंकार समाप्तौ प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इव अकार उकारो मकारे. Now, similarly, akara and ukara, when onkara is chanted, om, so at the chant, at the end of pronunciation of om, ओंकार समाप्तौ, ओंकार उच्चारण समाप्त हो गए, समाप्तौ, अगेन पुनः प्रयोगे च, एंड अगेन व्हेन अगेन री-अटर्ड ओम, सो आ ओम, ओम. अब क्या हुआ? माँ में अंटर दे मर्ज्ड. ओंकार समाप्ति, उच्चारण समाप्ति में, at the end of pronunciation of om, a and u merged in ma. Yes or no? Om. Again from that silence and inside only, again comes out. तो उसी में मर्ज हुआ, तो उसी से वहीं से, सो पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इव, जस्ट एज ओंकार मकार में जाना फिर अंदर वापस आना, बोथ ए एंड यू एंटर इनटू यम एंड अगेन कम आउट. अगली बार प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आप बाहर आ जाते हैं, नेक्स्ट सेकंड टाइम ओम में फिर बाहर आ जाते हैं. सो निर्गच्छत इव अकार उकारो मकारे. So now,
Vishwa and Tejasa goes into Prajna. So measured Mitehe. So only Makara is may Akara Nukara merging. From there it is coming out. That is one word. Mitehe, measuring. Second Karan similarity क्या है? Apitehe. Apitehe. Apitehe means because of absorption. लय हो जाता है उसमें. Absorption. Apiti means what? Apiti hi apyayah eki bhavah, meaning getting united. Getting merged, getting united in it. So ओंकार उच्चारणे ही अंत्ये अक्षर एकीभूतौ इव अकारः उकारौ, अकार उकारौ एकीभूतौ इव अंतिम अक्षरे. So in the last letter में, at the time of pronunciation of Om, Omkara Ucharane, Antya Akshare, meaning when we put Anta Akshara means the end Akshara, Makar mein, Eki Bhuto Yuva, these two, Akara and Ukara, they merge and get absorbed. Ma is absorbing A and U in itself. Laya ho raha hai andar. They are merging. तथा विश्व तेजसौ सुषुप्त काले प्राज्ञे. Similarly, Vishwa and Tejasa in Sushupta deep sleep state, in Prajna they are absorbed. One is measuring because comes out. लय हो रहा है, absorb हो रहा है, absorb भी हो रही है. So therefore, one is mitehe and apitehe. These two are causes. Similarity, sorry. अतो वा अतः वा सामान्यात् एकत्वं प्राज्ञमकारयोः. Because of these two similarities, there is ekatvam, identity, similarity between makara and prajna. Vidvat phalam aha. Now the phalam is said. Minoti hava yadam sarvam jagat yathatmyam janati ityartah. Minoti. Minoti means measures, no? I told you minoti, measuring. So, one who had understood the identity between makara and prajna, he will get a fruit that minoti, meaning he measures everything, meaning nothing can escape his vision, his understanding. He can measure anything. सारा का सारा नाप लेता है. इसका मतलब क्या है? नाप लेता है means everything is understanding. He is able to measure everything. Clearly he knows. उनको टेप की कोई जरूरी नहीं है. Minoti, everything means what? Minoti hava yadam sarva means what? Jagat yathatmyam janati ityartah. The meaning is that he knows the reality of the universe. That is called minoti. Measuring. Measuring means, measuring means what? I know everything. I measured, yes. No means what? I know the area. No, he measures everything. Meaning Jagat. He is able to know the everything in Jagat. Status of reality. That is one thing. Yathatmyam, the reality of the universe. Yathajnanam, Jagataha. The knowledge of the world as it is, Srushti as it is, he would know. Then, moreover, apitischa jagat karanatma bhavati ityartaha. Beautiful. He becomes the apiti. Apiti means what? Absorption. So he becomes apiti. He becomes apiti means what? He becomes what is that? He becomes the self. Atma. Jagat karanatma bhavati. He becomes the self of the whole world. Jagat atma bhavati. Karanatma. Jagat karanam. Atma bhavati. Ishwaraha bhavati. In that state of the causal state of the world, in that state, as the cause of the world, because prajna or samasti prajna, Ishwara is the Jagat karanam. As the karana of this Jagat, he becomes identified with the karana's atma. As self, he becomes self as the cause of the entire Jagat, meaning, therefore, he is able to absorb everything unto him. He becomes Jagat Karanatma. So, Jagat Karanatma means what? He is the place of absorption.
everything merges unto him. He becomes the place of absorption. Atra avantara palavachanam pradhana sadhana stutyartham. Now, avantara phalam, the fruits other than, so many fruits are mentioned here. Vishwaka fruits hai, Adimat, and what is that? You will be respected, become foremost, all desires are fulfilled. Prajna ka ek phal, and also Tejas ka ek phal, meaning Ukara and Tejas identification, similarity realized, some fruits. Makara and Prajna similarity is known, some other phalam. All these phalams, fruits which are mentioned here, it is not exact that Upanishad is wanting us to get caught up in these fruits. It is only to praise the knowledge of the Om. Stuti Artham. To praise knowledge. Why? ये आकार उकार मकार साधन में ही इतना फल मिल रहा है, तो ओंकार साधन करके सबको लांग कर ब्रह्मस्वरूप बन गया, तो अभी क्या चाहिए आपको? तो to praise that only these things are mentioned. Avantara phalam. Now some more points are there that we will take up tomorrow. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om Sadgurunath Maharaj Ki Jai.